Okay, live started. Yeah, it started. Okay, hello everyone. My name is Dr. Arif Hussain and I'm a plastic and cosmetic surgeon. And at the moment, I'm sitting at Ultimate Hospital. Get ready for your questions. Take out pencil and papers. Go on Google Doctor and ask me everything regarding any cosmetic procedure. And I'm ready to help you out. So while you just get engaged, I've done my clinical fellowship in aesthetic surgery from Toronto Institute of Plastic Surgery. I practiced there and I've learned a lot of things from Canada, and I've done my master in plastic surgery too, and I come to Pakistan for surgery and operate here for like a month or so. And if you have any question you can ask, okay? But that phone I cannot see a little bit. Can you read the questions? Yeah, okay, I'll read it. There is no questions yet. Oh, people are engaging. Hello, hi, I'm good. Okay. Get ready, ask anything. Yeah. So you can start off. Okay, so meanwhile you just gather your questions. So मैं कुछ शुरू कर देता हूँ. But I'm like cosmetic surgery. What is cosmetic surgery? We'll start from there. Okay. So cosmetic surgery is any surgery just to beautify yourself, just to get back to your old age, and unlike if you have some disfigurement on your face and your body, we can just do that as well. So liposuction is the most common cosmetic procedure, breast augmentation, facelift. And can you just plug in the charger with that, please, and bring it so that it should not go bad. So I'm going live, so you will be watching everything and listening everything. So let's start with liposuction. Do you guys have any question regarding liposuction? There is a question. Any other alternate to Gynecomastia? Well, gynecomastia is a female breast in man. It's a very social taboo in entire world. But unfortunately, there is no medicine. Even if you work out, you'll just reduce your fat, but you cannot release your glandular tissue. But some medicines are applicable at the teenage. The physiological gynecomastia arise at 14 से 15 साल की उम्र में आता है. उस वक्त नोटिस जाता है, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है, तो मेडिकेशन निकलती है. Once it's gone, आप टीनेज से आगे निकल गए, तो मेडिकेशन हेल्प आउट नहीं करती है. इवन कोई भी एक्सरसाइज जिम भी हेल्प आउट नहीं करती है, क्योंकि इट्स अ फीमेल स्ट्रॉमल टिश्यू. अगर कोई ऐसी बात होती तो women they work out, उनके भी ब्रेस्ट टिश्यू छोटा हो जाता. So I do very latest day care procedure. आप आएंगे मेरे पास, आप जाग रहे होंगे, you'll be watching my procedure and you can leave. So I've cultivated this procedure in like 15 years of time, and I do a lot. Any other? Yeah, there are no other questions. Okay, can नाम you नहीं talk बताया about mommy makeover? Mummy makeover. Who is? Hani Shakil. Anisha. Hani Shakil. Hari Shakil, mummy makeover. Mummy makeover is a very interesting procedure. I do a lot. In which as it says, जैसे कि मम्मी मेकओवर है, जब ख़वातीन की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, ज़ाहिर सी बात है उनमें ड्रास्टिक उनकी बॉडी में डिस्फिगरमेंट आती है ड्यू टू द प्रेगनेंसी. उसके बाद जब वो वेट लूज करते हैं तो उनके सारे मसल और बॉडी स्ट्रेच आउट हो जाती है. देन इट बिकम पेंडोलस एंड लूज. ब्रेस्ट भी उनका लूज हो जाता है, सुकड़ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मम्मी मेकओवर. जब हम उनको ब्रेस्ट इन्हांस कर देते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से या ब्रेस्ट अपलिफ्ट से, और उनको टमी टक करते हैं, जो नीचे उनके पैनल्स हैंगिंग होता है उसको निकाल के हम टक कर देते हैं, तो इट्स कॉल्ड मम्मी मेकओवर. एंड इट्स द टॉप मोस्ट कॉस्मेटिक प्रोसीजर इंटरनेशनली. नो प्रॉब्लम. कोई और क्वेश्चन है? Yeah, so you can just talk with such questions. ओके, हाउ पेनफुल इज द प्रोसीजर? और दुनिया में कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसमें कुछ पेन ना हो, ठीक है ना. और लेकिन वो पेन ऐसा होता है कि जस्ट 24 आवर्स तक रहता है. हम उसमें आपको इंजेक्शन दे देते हैं. I do very fast recovery procedures. Liposuction is a very fast recovery procedure. Breast augmentation मैं करता हूँ 24 hours recovery procedure. तो कुछ पेन किलर्स दे देते हैं, थोड़ा मोटा डिस्कम्फर्ट होता है कोई भी सर्जरी का, लेकिन you will getting better day by day. तो in 3 to 4 days में आप अच्छे खासे बेहतर हो जाते हैं. Tummy tuck में you require at least a week times to recover fully, means that you can move around, कि आप बाहर जा सकें कोई ऐसी चीज़ें, लेकिन घर के अंदर आप अपने मूव अराउंड कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जब मैं करता हूँ उसमें मैं कहता हूँ कि आप 1 महीने बाद उसमें वर्कआउट शुरू करें तो फिर सही रहेगा. और इट्स अ मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर डन इंटरनेशनली. फिर और व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी? लोग मुझसे बहुत पूछते हैं राइट एज.
देयर इज़ अ राइट एज फॉर अ सर्जरी, यानी कि अगर कोई भी आप सर्जरी करें कॉस्मेटिक तो 25 से 26 साल से लेके लाइक 70 ईयर्स तक आप कर सकते हैं until proven otherwise. और अमूमन हम एज देखते हैं सर्जरी की जब वी आर डीलिंग विद लाइक फेस थिंग्स, राइट, कि फेस कितना आपका नीचे जल्दी एज किया है. कुछ लोगों का फेस बहुत जल्दी एज कर जाता है, यानी कि 30 to 35 to 40 ईयर्स में उनका एजिंग ज़्यादा हो जाती है. देयर आर सर्टन फैक्टर्स इन्वॉल्व, स्मोकर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनकी वजह से एज कर जाते हैं जल्दी. या फिर जो एक अपनी उम्र के साथ एज कर रहे होते हैं, दैट गोज अराउंड लाइक 55-50. तो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग स्टार्ट होता है 30 में, कि क्रोज फीट पे लाइनें आनी शुरू होती हैं. उसके बाद जैसे आप क्रोज फीट की लाइनें आती हैं, फिर आपकी 5-6 साल उम्र बढ़ती है तो यू कैन स्टार्ट हैविंग द लाफ लाइन्स. उसके बाद जब आप 45 से ऊपर जाते हैं तो आपकी स्किन तो लूज़ होती है, आपके अंदर की जो मसल है वो भी लूज़ हो जाता है. मसल लूज़ हो गया, उसके बाद फिर जब आप बहुत ही एज में पहुंच जाते हैं 70+, 80+, तो फिर मसल एट्रॉफी भी शुरू हो जाती है. तो आप देखते होंगे लोगों के फेस सुकड़ने लग जाते हैं. So right age is like that. If any kind of problem arises on your face, at what age, that is the right age to address that problem. Like अब botox fillers वगैरह 25 to 28 years के लोग भी करा रहे हैं, जो celebrities हैं वो कराते हैं. Hi, Shakil is asking, doctor, both of my sons' chest is heavy, so what should I do? Well, you can bring them to me. I'm here till like 24th, and then I'm leaving back to Toronto. उसके बाद मैं Feb में आऊँगा. You can take my appointment. And what are the ages? और मुझे वो बता दें और आके मुझे दिखा दें. आज भी आप आ सकते हैं. I'm sitting at Ultimate, no problem. Yeah, okay. Okay, so रिकवर हो गया. हाउ लॉन्ग डज इट, लाइक गायनेकोमास्टिया का रिकवर है, मैं ऑपरेट करता हूँ, पेशेंट उसी वक्त चला जाता है, दूसरे दिन मुझे आके दिखाता है और फिर 5वें दिन से वो ड्राइव भी करना शुरू कर देता है. 1 महीने बाद एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देता है. लाइपोसक्शन, देयर आर सीक्वल्स ऑफ लाइपोसक्शन, कि जिसमें आपका स्टिफनेस, ब्रूजेस, सीपेज ऑफ द फ्लूइड, दैट इज ऑल नॉर्मल, दैट गोज अवे लाइक इन अ वीक्स टाइम एंड यू विल एबल टू वॉक लाइक द नेक्स्ट डे. व्हेन कोई भी मैं सर्जरी करता हूँ, चाहे वो पेशेंट को मैं एडमिट करूँ या पेशेंट घर भेज दूँ, नेक्स्ट डे से उनको कहता हूँ वॉशरूम जाएं, सारा कुछ करें, एवरीथिंग इज डन. तो रिकवरी इज फास्ट, लेकिन एक नेचुरल रिकवरी का प्रोसेस वो अपना चल रहा होता है. इट ऑल डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट एज वेल कि आपकी विल पावर कितनी है. लाइफोडीमा की ट्रीटमेंट क्या है एज 60 years? 60 ईयर. लिम्फेडीमा, अब आपके कहाँ स्कॉटल लिम्फेडीमा है या फीट में लिम्फेडीमा है. और लिम्फेडीमा होता क्या है? लिम्फेडीमा ये होता है कि आपकी बॉडी के जो जगहें होती हैं उसमें कुछ लिम्फ नोड होते हैं गदूद, जिसका काम ये होता है कि कहीं भी इन्फेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो तो उसको इंगल्फ करें यानी खा जाए. अगर उस गदूद में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए कहीं भी, तो जहाँ के भी वो गदूद हैं उस जगह की सराउंडिंग में स्वेलिंग आ जाएगी. तो मोस्ट कॉमन फीट में होता है, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, कि मोटा पैर हो जाता है. उसकी ट्रीटमेंट है कि हम उसको डीबल्क कर देते हैं, टिश्यू का लोड हम करेंगे तो लिम्फेटिक्स जो है काम ज़्यादा करेंगे. सो आप आके मुझे दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Where are you based? Well, I'm based in Canada and Pakistan and in Karachi, and right now I'm sitting at Ultimate Hospital. और सवाल आए आपके तो आ ही नहीं रहे. Joined है वो. They're just joining. Okay. Liposuction procedure, please बता दो. So liposuction is the procedure for body sculpting. मैं लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि liposuction weight reduction का procedure नहीं है. But we do encounter some weight reduction if you're doing in women. I have heard that मुझे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा महीने के अंदर 5-6 kg गिर गया. लेकिन liposuction जो है weight reduction का नहीं है, body sculpting का है. उन फैट का निकालने का अमल है जो कि ना एक्सरसाइज से डाइट से ना जा रहे हो. So you should be an ideal candidate of liposuction, and like your BMI आपका 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए. मैंने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, यानी कि मैं हाइट से डिपेंड करता हूँ, क्योंकि जिनकी हाइट लंबी होती है उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग बोन्स का भी वेट होता है. तो अगर 5'11" या 6 feet का मेरे पास कोई पेशेंट आता है and he is around 100 kg, then I take him for liposuction or for liposuction. अगर 5'8" है, 5'7" है and they are 100+, then I ask them to reduce weight. What are the side effects of or complications of rhinoplasty or cosmetic surgery? Well, rhinoplasty means nose job, and complication, there is no complication for rhinoplasty. It's just whether you are happy with your nose when we made it or not. Okay, so that the counseling is very important. हमें पेशेंट के साथ अच्छी तरह बात करनी होती है. पहले उसका स्टेटस देखना होता है कि नाक उसकी किस पोजीशन की. नाक की मैं मिसाल इस तरह देता हूँ
कि नाक के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हैंगर्स, जो आपकी बोनी स्ट्रक्चर है, जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, और जो ऊपर की स्किन है दैट इज़ ईदर अ ब्लैंकेट और अ शर्ट। तो आप देख लें, अगर आप हैंगर को शर्ट पे टांगते हैं तो एक्सपोजर अच्छा रहता है, और आप एक ब्लैंकेट को आप हैंगर पे टांग देंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो एशियंस हैं, जो कोरियंस हैं, जो साउथ अफ्रीकन्स हैं, उनकी नाक जो है वो थिक नोज होती हैं, तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा टाइम लेके आता है। एज़ पर जब मैं बाहर करता हूँ कोकेशियन नोजेज होती हैं, वेरी थिन नोज, हमें एकदम उनका रिजल्ट प्रॉम्प्ट होता है। Complication, there is nothing. I mean, there is a little swelling for 48 to 72 hours and then you are good to go, no problem. Okay, and you can talk about the cultural issues. Cultural issues. So yeah, I'm like practicing cosmetic surgery in the third world country. Even I'm like Pakistan. I have compliments from my abroad surgeon that हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान भी इतना एडवांस हो गया है, सारा कुछ है। तो मैं इनको कहता हूँ you have to change your thoughts. बट पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स कल्चरल इश्यूज बहुत हैं। यानी कि एक लड़की आई मेरे पास 25 इयर्स, बहुत मोटी थी, ड्रास्टिकली उसने वेट रिड्यूस किया, एंड शी इज़ नाउ बेस्ट कैंडिडेट फॉर एक्सटेंडेड टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी। लेकिन उसमें हम जब काटेंगे तो विल हैव अ स्कार एट द नेवल एंड, यहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो शी इज़ गोना गेट मैरिड, पीपल विल आस्क व्हाट इज दिस स्कार फॉर, राइट? बाहर दे डोंट केयर। ओके, तो हम जो भी करें, तो दैट्स द कल्चरल इश्यूज हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करानी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ everybody has a right to look good. I mean, like अगर नहीं करानी चाहिए तो I ask them to stop watching GQ magazine and all other things. Why they're watching that? Okay, they should not do that. So everybody has a right to look good, and what we can do, we can do. Okay, so any other question I have to deal with? Otherwise, yeah, they're just like joined, and there's this question यहाँ पर PCL. Please, PCL reconstruction. What is PCL reconstruction? I don't know. Please, can you elaborate? I don't know what's that. Okay, non-surgical treatments. No. We'll come about surgical treatment. How can I book an appointment? You can call Ultimate, and you can call my number. You can go on my page, Insta page, Static Shapes PK, Facebook, Dr. Arif Hussain, everywhere, or call Ultimate directly. And how many plastic surgery training I have had? I mean, like I've been practicing cosmetic surgery only for past 16 years. Before that, I used to do a lot of reconstruction. So now I've stick to my cosmetic thing. And there are a lot of non-surgical treatment. बहुत सवालात आते हैं हमारे पास non-surgical के, जो मेरे पास सवाल हैं, ये कुछ patients ने भेजे हुए हैं सवाल जो हम देख के पढ़ रहे हैं। तो non-surgical treatment में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब non-surgical, surgical को आप क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ अगर बॉडी के अंदर invasive जा रही है, that is surgical. So less invasive, more invasive. Non-surgical तो just like lasers, just मशीनें जो ऊपर से आपके काम करती हैं, creams and that's it. Less invasive में जो है, जो आपके सर्जरी के टाइम को बाय करें तो botox हैं, fillers हैं, PRP I do a lot. I've started PRP 10-15 years back in Pakistan. मैंने टीवी पे आके लोगों को दिखाया, सारा कुछ किया। और प्लेटर डिश प्लाजा ट्रीटमेंट है, वो आपकी कोई भी स्किन को रिजनरेट कर सकती है, बालों की क्वालिटी को ला सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि आप जो पेशेंट कॉस्मेटिक का है, he or she should understand what the surgeon is telling them. हमारी एक लिमिटेशन है, हम एक लिमिट तक हर चीज़ को कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग, वी कैन नॉट स्टॉप योर ईटिंग हैबिट्स, वी कैन नॉट स्टॉप योर हेल्दी लाइफस्टाइल। हम आपको लिटरेट कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू, इट कैन स्टे फॉर एवर इफ़ यू जस्ट कीप इट। हम लाइक यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट करें, नरिशिंग लें, सारा कुछ करें। जैसे लाइपोसक्शन, अगर आप समझते हैं कि लाइपोसक्शन हमने कर दी और 10 साल बाद भी आपके वहाँ फैट नहीं आएगी, तो इस तरह नहीं है। You can regain fat again, but you have to have healthy lifestyle. जो मैं आपका काम 2 घंटे में कर लूँगा, हो सकता है आपको 1 साल लगे उसको करने में। So it's a big difference. And the success rate of cosmetic surgery is very good in Pakistan even. और and मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे भी लोग मेरे पास आते हैं। I'm always busy whenever I come. I'm doing mummy makeovers, I'm doing facelift, I'm doing gynecomastia a lot, hair transplant. So that's and I do very latest procedures, whatever I do, bring everything from Canada, my drugs, my sutures and everything. और कोई question देख लें उधर? जो वहाँ पर नहीं है? यहाँ नहीं है। Okay, so I'm sitting here. Just Google it out and ask me anything. Okay, or do you want to ask me something?
I wanted to ask about lip fillers and like girls get those cheap fillers done and